जी अस्सलाम वालेकुम. Today's article from The Economist, which is published on 4th April, and the topic of the article you can see here, under pressure. Actually it's related to India, and The Economist published this article in the portion of Asia. Then first of all we read out this article, and at the end we will discuss its summary and also the difficult words in this article. So let's begin. Lockdowns have sparked a stampede home. Where do you belong? This is not a metaphysical question for English-speaking Indians. Belonging to a place means simply that you come from there. As in, I live in Delhi but belong to Bengal. Yet for millions of migrant laborers not only in India but across Asia, COVID-19 has given the question new meaning. A Malaysian worker in a Singapore electronics plant, a Filipino servant in a wealthy household in Bangkok, or a Bihari cook in Delhi restaurant all faces a similar dilemma. In a time of mass layoffs, curfews and sharp travel restrictions, where do they belong? इस फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ये डिस्कस कर रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं. ये कोई तभी क्वेश्चन नहीं है. जैसा कि मैं जो हूँ वो दिल्ली में रहता हूँ और मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ. जितने भी हिजरत करके आए गए यहाँ पे मज़दूर हैं इंडिया में भी या पूरे क्रॉस एशिया, वो क्या कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. जैसे कि मलेशिया में कोई वर्कर है, सिंगापुर इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पे काम कर रहा है, या फिर फिलिपिनिया सर्वेंट है जो कि बैंकॉक में काम कर रहे हैं, या फिर कोई बिहारी कुक है जो कि दिल्ली के रेस्टोरेंट में काम कर रहा है. तो इन सब को सेम डिलेमा फेस कर रहे हैं, यानी सेम प्रॉब्लम को सामना कर रहे हैं. तो ये जितना भी प्रॉब्लम की सिचुएशन है, कर्फ्यूज़ हैं या शार्प ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इन सब लोगों के लिए ये मैटर करती हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं. Prosperous expatriates and choose whether to stay or go, and if they are citizens of rich countries, their governments may help to fly them home, but for many the sudden absence of work leaves little choice. अच्छा, अब इसमें वो बता रहे हैं कि जो प्रॉस्पेरस का मतलब होता है खुशहाल, और एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है जलावतन, कि जो कि उनके पास चॉइस होती है कि वो वहाँ पे रुकें या ना रुकें. या फिर जो रिच कंट्रीज़ हैं उनकी जो गवर्नमेंट है वो अपने वर्कर्स को या अपने रहने वालों को बुला सकती हैं, उनके पास भी चॉइस है. लेकिन इट इज़ नॉट जस्ट हार्ड टू सर्वाइव इन एक्सपेंसिव सिटीज़ विदाउट अ पे चेक, और ये बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना एक्सपेंसिव सिटीज़ में विदाउट पे चेक. वेदर यू आर वन ऑफ द एस्टिमेटेड 2M international migrants in South Asia laboring as servants or toil in one of the hundreds of thousands of small industrial workshops that power such Indian industries as gem polishing or shoemaking. Your place of work is also often where you eat and sleep. Even after years on the job, the minute you step off the treadmill, there is nothing for it but to head home. So it was that when Narendra Modi, India Prime Minister, on March 24th announced a snap decision to lock down all the country 1.3 billion people for 21 days and to suspend rail, road and air transport. The immediate closure of business forced a hefty chunk of the workforce into awkward motion. इसमें फिर वो यही बता रहे हैं कि जो इंडिया में सिचुएशन है, जितने माइग्रेंट्स हैं वहाँ पे तकरीबन 1.3 बिलियन जो लोग हैं उनको लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है. एटलीस्ट 60,000 people, according to the government, very low estimate,
began to move despite the daunting distance between bustling cities such as Surat, India, West Coast, and impoverished sources of rural immigration such as the state of Uttar Pradesh. Many simply started walking along the empty roads. अब इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम पेश आ रही है, बजाय इसके कि वो लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग को अडॉप्ट करें। वो बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं और उनको अपना वापसी का रास्ते का नहीं समझ आ रही कि किस तरह से वो अपनी मंजिल पे पहुँचें, तो इसलिए वो एम्प्टी रोड्स पे भी वॉक कर रहे हैं। अच्छा, आगे है चेजन्ड बाय रेंचिंग टेलीविजन images of the exodus, state government arranged buses for some of the migrants and Mr. Modi himself apologized for any inconvenience caused. अब उसमें जो मिस्टर मोदी है वो खुद भी अपोलोजाइज़ कर रहे हैं कि इनकन्वीनियंस कॉज्ड की वजह से ये उनके लिए बसेस भी अरेंज कर रहे हैं। बट then the central government changed take again the mass flight it realized was undoing the very purpose of the lockdown, which was to stop the spread of the virus. In testimony to the India Supreme Court, the government claimed some word improperly that as many of 1 in 3 of the migrants could be carrying the disease, so new order were imposed obliging state governments to quarantine all incoming travelers. This meant that often penniless and exhausted migrants who had already braved club welding police enforcing the national curfew then faced incarceration in hastily converted shelters in such places as government schools. Many will now remain stuck in such places for weeks, while those who turned back or stay put in the cities where they work face a precarious existence. Delhi state government is making plans to supply free food to more than 1 million people a day. Other Asian cities are also coping with jobless stay-behinds. Foreign workers who are now stranded under Malaysia's movement control order, many from Indonesia, complain that they are living in dangerously crowded quarters and running out of money. Some government have acted to give stay behind some support, but this is unusual. Singapore, where migrants make up 38% of the workforce, has offered businesses a stipend of $35 a night for up to the 2 weeks to accommodate commuters from Malaysia, which has shut its border. Migrants who fall sick from the coronavirus in the city state will not have to pay for treatment. Sadly, some of the India's migrant workers who did reach their villages have not fared too well either. One group that made it from Tamil Nadu in the far south all the way back to the Bengal have hoisted hammocks, charpais and mosquito nets into trees. They say they must live in the suspension as there is no other way in their village to maintain social distance. Elsewhere, returning workers are held in suspicious as possible carriers of disease, sparking conflict. In one case in Bihar, a man was beaten to death after the pointed police to fellow returnees who should have been quarantined. At Bareilly in Uttar Pradesh, television cameras captured the humiliation suffered by immigrants forced by police to squat in a road as they were sprayed with bleach, supposedly to disinfect them. The fear of immigrants being a vector is far from misplaced. Workers who fled Mumbai to escape the 1918 to 90 Spanish flu pandemic carried it far into Indian provinces, and HIV, the virus which caused AIDS, was also spread along migrant corridors, notes Chinmay Tube, the author of a book on Indian migration. Just as Chinese
Migrant textile workers may have carried COVID-19 to Italy. Some of the first note for the disease in India appear to have been seeded by the migrant dairy workers returning from Italy to Punjab and workers from Arab Gulf returning to home in Kerala. As if that were not bad enough, some of the poor Indian provincial regions to which the recent wave of the migrants has just returned may prove exactly the wrong place to be in epidemic. The 120 million people of the state of Bihar, for instance, must make do with just for testing centers for COVID-19. They share a mere 0.11 hospital beds for every 1000 people compared with 1000 in Delhi or 2.4 and 1000 in Singapore. More immediately, what many of the migrants fear is simply financial ruin or even starvation. And it is not just the migrants themselves at risk. In 2017, international remittances brought Asia an estimated $268 billion, much of it flowing the rural economies that have few other resources of the investment. The scale of such transfers across India is not known, but economists estimate the total size of the migrant workforce at about 100 million people, many of whom send regular transfers home, where they service rich advanced economies such as Singapore's perform to manual drudgery in India. Migrant workers are among the most vulnerable to any shocks. At times like this, they pay the price for the trade that some of their employers most prize, being invisible. अच्छा, इस सारे आर्टिकल में उन्होंने यही डिस्कस किया कि किस तरह से माइग्रेंट्स हैं जो हैं वो कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं और उनकी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो भी सेफ़ नहीं हैं इंडिया में चूँकि उनकी पॉपुलेशन काफ़ी है, तो उनकी जो स्टेट्स हैं वहाँ का उन्होंने डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश का, और उसके अलावा उन्होंने केरला स्टेट का भी डिस्कस किया है कि वहाँ पे भी काफ़ी इमिग्रेंट्स जो हैं वो वापस जा रहे हैं और ये कोविड को वहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे स्टैम्पीड का मतलब होता है अफरा तफरी, यानी किसी भी चीज़ में हलचल मच जाना, और स्पार्क का मतलब होता है किसी चीज़ को चंगारी लगाना। तो असल में इस टॉपिक का मतलब ये है कि लॉकडाउन्स हैव स्पार्क्ड अ स्टैम्पीड होम, कि उन्होंने जो लॉकडाउन्स हैं उन्होंने एक चंगारी अफरा तफरी की जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर दी है। मेटाफिज़िकल वर्ड है, मेटाफिज़िकल का मतलब होता है तभी तौर पे। आगे डेलिमा वर्ड है, डेलिमा का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम, मसला या दिक्कत या दुश्वारी। और ले ऑफ्स का टाइम, मास ले ऑफ यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल या आप कह सकते हैं प्रॉब्लम का वक्त जो चल रहा होता है। प्रॉस्पेरस खुशहाल को कहते हैं और एक्सपेट्रिएट कहते हैं जला वतन को। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे जी, एफटी वर्ड है, इसको आप ज़बरदस्त कह सकते हैं या फिर यानी क्वांटिटी में ज़्यादा भारी, और चंक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत बड़ा कोई टुकड़ा होना। डिस्पाइट का मतलब बजाय इसके भी आ जाता है, या इसको आप दुश्मनी या किसी बुग़्ज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बजाय इसके तौर पे यूज़ हुआ है। डाउटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की धमकी देना या धमकाना या डराना। और इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है कि कोई कंगाल या गरीब या कम लेस, यहाँ पे वैसे इम्पोवरिश्ड रिसोर्सेज यानी कि बहुत कम जो रिसोर्सेज हैं वो हैं इंडिया के पास इन सिचुएशन